Hello my dear student, in previous class we have already studied about position time graph and discussed some graphical representation between position or displacement with respect to time. And also we have taught that how can velocity, acceleration, speed increases, decreases, all of the condition we have already discussed in previous class. So in this class we will discuss about velocity time graph and solve some graph between position and time. So let's start. So this is a question, and according to this graph it is a position time graph and it is the slope, and from displacement time graph, which one of the following graph, V-t graph is correct, that we will choose. So देखो फास्ट हमें देखना जे डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वेलोसिटी का पॉजिटिव हवा नेगेटिव हवा जीरो हवा कि काण हवा सेला हमके ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे कहिचे. सो तुम टाइम एक्सिस के दिगरे जेन ग्राफ का तुम टाइम एक्सिस के दिग जाई छी से एक्सिस नु हमें फर्स्ट पूरा टेंजेंट ड्रा करना. टेंजेंट ड्रा करना and that slope represent displacement time graph which is represent velocity. ठीक है. अब हम प्रीवियस क्लास रे बारंबार कहिछे जे तुम ई टाइप रो लाइन थिबा तो that angle is less than 90 degree, so velocity is positive. अब ई टाइप रो लाइन थिबा तो that angle is greater than 90 degree, so velocity is negative. Already कहिथिली हम बतैथिली जे positive इन का जे होचे with respect to time displacement is going to be increased, so velocity is compulsory positive. So in this class also we solve 2 or 3 position time graph, then we discuss velocity time graph. So first, according to this question, this tangent of this theta is lesser than 90 degree, so velocity is positive. So in this case velocity is positive. And what happened to the acceleration? As this is a concave upward. Number कहली if concave upward थिबा acceleration will be taken as positive, concave downward थिबा acceleration is taken as negative. खालवा आंसर concave upward थिबा positive acceleration, और यदि downward के आसो acceleration हबा negative. So in this case concave is upward, so acceleration is positive. Clearly बुझलो. अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रो समान साइन रहउची, स्पीड कंपल्सरी इंक्रीज. आज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रो समान साइन रहबा, प्लस प्लस रहले भी स्पीड इंक्रीज होबा और माइनस माइनस रहले भी स्पीड इंक्रीज होबा, बट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी है सेम साइन, then speed always be increase. Either speed is decrease when acceleration and velocity is opposite in sign. सो देखो ये ग्राफ के देखो केटा ठीक हवा जे ग्राफ हिसाब के वेलोसिटी सब बोले पॉजिटिव रे रहबा, तो ये ऑप्शन भूल जीवा, ई ऑप्शन भी भूल हवा बिकॉज़ ई ऑप्शन में भी वेलोसिटी नेगेटिव रे अछि, ई ऑप्शन में भी वेलोसिटी नेगेटिव रे अछि और ई ऑप्शन में भी वेलोसिटी नेगेटिव रे अछि, तार माने गोटे ऑप्शन ही राइट हवा. देखो पूरा करेक्ट पूरा करेक्टली राइट हवा माने लेना, अप्रोक्सीमेटली जोटा राइट हवा से ऑप्शन के ही तुम राइट धरबो. सो देखो इन दिस केस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी इंक्रीज होचे, सो एक्सीलरेशन इज आल्सो इंक्रीज. सो वेलोसिटी टाइम हिसाब से बढ़ुचे जेहेतु वेलोसिटी पॉजिटिव,
आई थिंक ऑप्शन में वेलोसिटी नेगेटिव, सो ये ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट तो बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छे आउ भी क्वेश्चन करेमा किंतु এটা হলো ফান্ডামেন্টাল জিনিস মানে মনে রাখো এই টাইপের তোমাকে দিয়েছে আর তোমাকে কইছে in this also we choose VT graph. So this is time, this is velocity, this is first option, time, velocity, this is second option, time, velocity, this is third option, velocity. This is last option. So which of the following graph is correct? VT graph is correct as for the position time graph. So first, velocity is positive or negative as for this graph. If we draw a tangent, देखो tangent क्या एक्सिस है तुम ये आगे भी ड्रॉ कर पारो ये आगे भी ड्रॉ कर पारो किंतु टाइम एक्सिस रे जे पॉइंट ता तुम लागि थी से डायरेक्शन में ही tangent ड्रॉ करबो. So if you draw a tangent then this is this type of line and मैं तुमके कोई चाहिए ये टाइप of line रहले velocity is positive होगा because theta is less than 90 degree. Then what happened to the acceleration? If we draw tangent at any point, then angle is constant. Theta is constant. So theta the constant रहेगा. Like compulsory this position time graph, the slope of this position time graph is given to velocity. तो velocity में velocity positive होगा, किंतु velocity भी constant. वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहबा जो भी वैल्यू बारीबा वेलोसिटी रो फिक्स वैल्यू पॉजिटिव रे बारीबा पॉजिटिव रहबा किंतु वेलोसिटी जे तो इन थीटा कांस्टेंट होचे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट बिकॉज़ द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज tan theta is give velocity and if theta is increase then velocity also will increase but in this case theta is constant so velocity is also constant. अब वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहबा मतलब वेलोसिटी चेंज हेले ही एक्सेलरेशन को आजीबा किंतु वेलोसिटी रो चेंजेस देखा नहीं जेबा सो एक्सेलरेशन इज 0. मन रखथिबा एक्सेलरेशन केते बेला आसबा जेटा कर्व आसबा अपवर्ड कॉन्केव कर्व रहबा बेले एक्सेलरेशन पॉजिटिव डाउनवर्ड कॉन्केव कर्व रहबा एक्सेलरेशन नेगेटिव किंतु स्ट्रेट लाइन रहले एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेकन एट 0 मन रखथिबो. सो एति जिनिस में जानलु एबे में बाहर करमा ई ग्राफ बिंदु केनटा राइट हबा. सो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. दैट कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी इज the constant value of velocity is along positive direction. So देखो अब कांस्टेंट होचे with respect to passage of time the velocity is always constant. At this time velocity is this, at this time velocity is also this, at this time velocity is also this because velocity is always constant with respect to passage of time. So this equation is right and this graph is right. ये ग्राफ रे देखो with respect to time the velocity is uniformly increases but as for this question if we want to draw a tangent at any point then theta is always same or constant so velocity constant रहा किंतु ये डायग्राम रे तमर velocity uniformly increases होची so इटा भूल हेबा.
ये तो वेलोसिटी नेगेटिव होचे भूल हवा आ ये देखो वेलोसिटी बढ़ला परे कांस्टेंट आछे एटा भी भूल हवा वेलोसिटी इनिशियली रु ही कांस्टेंट हवा as per this displacement time graph. So this option is right. तो समान हवा माने नहीं किंतु अप्रोक्सीमेटली जेनटा तुम समान लगवा जेन ग्राफटा से ग्राफ ही राइट हवा नेक्स्ट देखो ई टाइप रो जदी ग्राफ थिबा तुम जदी दिखिबा ई टाइप रो એટલે મને लागो जे this point and this point the graph is parallel to the time axis ये भी parallel रहउछे ये भी parallel रहउछे ये भी parallel रहउछे or the tangent parallel to the time axis so velocity is in this case is 0 मन रखिबो velocity केस रे हवा 0 because the position time graph produce velocity so parallel probably देखो ई पॉइंट रे s2 s1 करो 0 हबो because से गुटे टाइम रे गुटे डिस्टेंस रे रहबो इन दिस केस जदी तब दुईटा पॉइंट s2 s1 करबो 0 इने भी s2 s1 करबो 0 गुटे पॉइंट रे गुटे एक्सिस रे गुटे डायरेक्शन रे रहउछ सो हम तो मैं ऑलरेडी आगो भी कहिली तो ई टाइप रो जदी रहबा वेलोसिटी का 0 है मन रखिबो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़मा पोजीशन टाइम ग्राफ सरी गला एबे हम पढ़मा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो हेडिंग दियो फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़मा फॉर यूनिफॉर्म मोशन velocity time graph for uniform motion. So what is the meaning of uniform motion? With respect to passage of time, the velocity of the body is always constant. That means if we plot a graph between time and velocity time graph, if you plot a graph between velocity and time graph, then with respect to passage of time, suppose this point represents the velocity of 2 meter per second. So with respect to passage of time at this point, at this time suppose 1 second, the velocity is 2 meter per second. In 2 seconds, the velocity of body again 2 meter per second. In 3 seconds, the velocity of body again 2 meter per second. So with respect to passage of time जदि velocity टा constantly थिबा सब बेले constant रहबा सेते बेले हमें से velocity बा ताकि हमें कॉमन मोशन की यूनिफॉर्म मोशन क्लियरली बुझलो so if you plot a graph between velocity and time for uniform motion then with respect to this set time velocity this with respect to this time velocity is also same with respect to this time velocity is also same so if we draw a graph and that graph is parallel to the time axis. So clearly बुझला parallel कहाँ जरूर वाला because with respect to passage of time the velocity is always constant. That means the velocity of body is 2 meter per second. Then the velocity of body is always 2 meter per second with respect to time. वेलोसिटी से समान वेलोसिटी रे ही बॉडी गति करूथिबा तार वेलोसिटी अधिक भी नहीं होई कि कम भी नहीं होई से टाइम जते भी जाओ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही थिबा बॉडी का सेते बेला हम जदी ग्राफ ड्रॉ करना बेला ना बा जे कोनोसी टाइम रे तार वेलोसिटी का से 2 मीटर पर सेकंड रे अछि सम ग्राफ ड्रॉ करना बेला दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस तो लगभग यूनिफॉर्म motion the velocity is always constant
with respect to passage of time. So the VT graph produce straight line. So the VT graph is straight line parallel to time axis. And in this case, if we want to calculate the area between any time interval, then that area is represent dex. देखो represent काफी कौन by area. Suppose along this direction, suppose at this time, suppose we consider this time is t1 and this point is a, and this time is t2 and this point is b. That means in t1 time velocity of body is 2 meter per second, and that point, suppose if we plot a graph, then that point is a. Then in t2 the velocity of body is again 2 meter per second. So in t2 second the velocity of body is 2 meter per second. So t2 time रे तुम मिसेबो पहले ये point ही आसबा. So एबे देखमा जे between t1 and t2 the body cover this distance. The body cover this area. Between t1 and t2 the body cover this area. So if we want to calculate this area, suppose this is A, B, C, D. And area is represent X. So देखो the area of VT graph is equal to K, area of VT graph between times T1 to T2 is equal to area of A, B, C, D. Area of A, B, C, D. So area of A, B, C, D can you solve power? Length into breadth, that means CD into AD. CD into AD. Therefore, AD is length. This is breadth CD. So therefore, AD into CD column. Then instead of AD, I can written V, because देखो ये origin group body केते velocity रे अछि 2 meter per second एला consider करछे, suppose that is V velocity. तो origin group body V velocity रे अछि. So ये origin group एतकी जाय सेटा represent करबा काके V के, और इटा parallel to the AD. So V जेते हेबा AD भी सेते हेबा. Origin group ई point तक V velocity. So D ru A जाय V पर. So AD जाय के हम लिखि पारबो V into CD जाय के केते लिखि पारबो, धर एटा 5 सेकंड रे 10 सेकंड पले भीतर केते सेकंड बढी छी 5 सेकंड बढी छी, बिकॉज़ 5 सेकंड रू 5 सेकंड गले तो 10 सेकंड हेबा. तो 5 सेकंड बढी छी हम केता जानछु 10 - 5 करछु. So in this case also CD is equal to T2 minus T1. T2 minus T1. So velocity into change in time is equal to displacement. So मने रखिथिबो जे VT ग्राफ रो एरिया ऑलवेज का के रिप्रेजेंट करसी डिस्प्लेसमेंट के रिप्रेजेंट करसी. मने रखिथिबो भलसे इंपोर्टेंट जिनिसटा जे VT ग्राफ रो एरिया टा डिस्प्लेसमेंट के रिप्रेजेंट करसी. तम न्यूमेरिकल सॉल्व करा बोले ये फार्मूला यूज होबा. चला सरला. तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. तो लगी दबो एरिया अंडर VT ग्राफ प्रोड्यूस और रिप्रेजेंट
displacement. So that was our velocity time graph for uniform motion. Now we देखना uniform accelerated motion. Uniform motion और uniform accelerated. So uniform motion और uniform accelerated motion भितर difference क्या ना? Uniform accelerated motion means acceleration सब जगह रे समान होगा. Uniform motion means velocity सब जगह रे समान होती है. किंतु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पले आसला तार माने वेलोसिटी समान नहीं रहे के समान रहबा एक्सेलरेशन सब जगह रे समान रहबा. तो फर्स्ट हमें देखुथिले यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी सब जगह रे समान रहथिला तो vt ग्राफ देखुथिला. एबे में एक्सेलरेशन सब जगह रे समान रखमा तो vt ग्राफ काढबा. देखो so this is x axis time is taken and this is y axis velocity is taken. Velocity. So देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जेने मैं ऑलरेडी तुमके पढ़े छी यूनिफॉर्म मोशन केते बेले को जीवा इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एवरी पॉइंट इज सेम. अब सेम केते बेले हबा इफ द बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये जो तुमके पढ़े छी देखो एक्सेलरेशन बेले तो वेलोसिटी और टाइम रो ही आसबा. तो धरो in a velocity roller in a time roller. Suppose in 1 second the body changes its velocity 5 meter per second. In 2 seconds the body changes its velocity 10 meter per second. In 3 seconds the body changes with velocity 15 meter per second. And in 4 seconds the body changes its 20 meter per second velocity. So you know that acceleration is equal to velocity upon time. So if you calculate the velocity at this point, acceleration at this point, then velocity of time, velocity upon time, so 5 upon 1 5, 10 upon 2 5, 15 upon 3 5, 20 upon 4 5. So in equal interval of time, if the body changes its velocity equally, then acceleration of the body at every point is same. Our acceleration समान रहले हम ताके कमा uniform accelerated motion. So clearly बुझलो का उधर कह दउ छे velocity जदी equally change हेले ही एक्सेलरेशन सब जगह रे समान हेबा. काजे जदी इटा के जदी इक्वली चेंज नै करू जदी हम 11 कर देबी प्लस एक्सेलरेशन केता हेबा 11 upon 2 ही जीवन 5.5 की जीवन. किंतु इन एक्सेलरेशन 5/1 इन एक्सेलरेशन 15/3 means 5. किंतु इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम means 11 upon 2 5.5. सो ने प्रॉब्लम एक्सेलरेशन चेंज ही गलो काजे वेलोसिटी इक्वली ही नहीं इंक्रीज किंतु इक्वली देखो 5 5 5 5 बढ़ुचे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेतबले एक्सेलरेशन तुम जेन जगह रे कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन का समान रह और सेतबले हम तो कहमा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. सो if we plot a graph between velocity and time for uniform accelerated motion, then compulsory the graph is straight line. I have already teach about this uniform acceleration along with the vt graph. देखो 1 सेकेंड रे 5 गला 2 सेकेंड रे 10 गला 3 सेकेंड रे 15 गला 4 सेकेंड रे 20 गला. तो जदि हम 1 सेकेंड रे 5 नामा 2 सेकेंड रे 10 नामा 3 सेकेंड रे 15 4 सेकेंड रे 20 सो देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही प्रोड्यूस होगा मन रखित. तो इट इज possible for uniform accelerated motion. तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. तो एबे हम पढ़मा हमर बुक हिसाब से पढ़मा बुक हिसाब से डेरिवेशन पढ़मा जे वेलोसिटी y एक्सिस पे रहबा x एक्सिस पे तमा टाइम रहबा. तो सपोज एट इनिशियल टाइम द बॉडी हैविंग सम वेलोसिटी v naught. Suppose initial time the body having some velocity v naught. And if we increase the time, the velocity is also increase uniformly increase हेले ही हम ताके uniform accelerated motion कर equal increase हवा. Then if we draw a graph, then it is straight line with time axis, inclining with the time axis. So finally, suppose the body having final velocity v in final time के देखो मैं t2 कंसीडर कर
आ तुमके मैं कही बाबू मैंने जे VT ग्राफ डेरिवेटिव रे पढ़ी जे VT ग्राफ रो स्लोप कौन प्रोड्यूस करबा एक्सेलरेशन. So if we want to draw a slope, suppose at this point if we want to draw a slope, then we draw a tangent, we draw an angle. Suppose at this point we want to calculate the slope. So हमके इटा भी जानबा पड़बा ट्रायंगल हिजिबा. And suppose at this point in time t1 the body having velocity v1. मन रखते the body having velocity v1. तो देखो first with initial time the body having some velocity v0, then in equal interval of time the body changes its velocity equally, so the graph is straight line and final velocity is v. Then at this point we want to a tangent, so we draw another line and angle, and at this point suppose the body having velocity v1, and at this point the body having velocity v1 in time t1. So if graph run adhara a b adhara ita c I point dhara d. So we draw a slope along the triangle BCD. तो slope of VT graph आप slope लगवा पूर्व explanation कर दिया. Uniform accelerated motion गाना. So uniform accelerated motion means गाना if the velocity of body changes equally in equal interval of time. तो velocity equally change हवा प्लस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन हवा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बारंबार बुझे छे देखबो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़े छे जदि या डाउट होछे सेने भी देखबो इने भी तो बुझबा कथा बुझे छे. सो इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब वेलोसिटी इक्वली चेंज हेले ही एक्सेलरेशन सब जगह रे समान हेबा बतेली ना देखो. तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then acceleration is said to be acceleration of a body is said to be uniform acceleration. So अब uniform acceleration है लेकर आना बात. So VT graph is straight line. VT graph के हिसाब से प्रोड्यूस होगा straight line प्रोड्यूस होगा inclined with time axis और respect में inclined equal प्रोड्यूस होगा. हला ये हमें स्लोप पे हमारे देखो एबे स्लोप मान मान देखो वीडियो को पॉज करबो आ नोट लिखबो मन रखियो. तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ इन भी स्लोप बने में VT ग्राफ रो स्लोप ऑफ VT ग्राफ. तो देखो इन ट्रायंगल BCD tan theta, slope means tan theta is equal to BC upon CD because perpendicular upon base BC upon CD. So instead of BC we can be use V minus V1. आज देखो भल बतिए देखो जो origin रू ई जब फाइनल वेलोसिटी आसला origin रू फाइनल वेलोसिटी केता अछि ये origin रू फाइनल वेलोसिटी V अछि तापर ये origin रू ई वेलोसिटी v1 अछि तो हमके दरकार ई वेलोसिटी सेकेंडर बार टोटल v रू देखो हम टोटल v रू जदि मैं v1 के काटी देबी ले बचबा एतकी बचबा. सो एतकी ही v1 v minus v1 बिकॉज़ टोटल v रू v1 के काटलो
टोटल v रू v1 के काटल तो बचला इथे सो v minus v1 and it is parallel to the bc so v minus v1 is equal to bc हवा v minus v1 क्लियरली एबे देखो ई टाइम हम बार बार बुझेली एतकी टाइम हवा t2 minus t1 and it is also parallel to the cd so it is also t2 minus t1 cd so instead of v we can be use v minus v1 and instead of cd we can be use t2 minus t1 so this is change in velocity upon change in time which is nothing but acceleration so acceleration how acceleration is increase with increase in theta तो ये तुम क्लू कान पाइलो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज की एक्सीलरेशन मन रखिथिबो इना दवा लागि देखतो v minus v1 t2 minus t1 दैट लागि परति तो dv upon dt change in velocity upon change in time which is acceleration so slope of vt graph is produce acceleration अब बहुत सहज जब हमनी किछ नै ना देखो ओरिजिनली वेलोसिटी v0 रे थिला तब किछ टाइम गला परे v1 हला अब किछ टाइम गला परे v फाइनल v हला तब तमे इ न तमे स्लोप करो का स्लोप जे कोनोसी जगह रे टाणो स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सीलरेशन तो सपोज धर तमे इ जगह रे तमे स्लोप प्रोड्यूस करो तो स्लोप प्रोड्यूस करो इ ट्रायंगल नी पर प्रोड्यूस करो तो इ ट्रायंगल रो वैल्यू तुम इ वैल्यू के देखो इ सम कंपेयर करो v minus v1 अब बिटवीन t1 t2 भितरे तुम्हारी cd टा हवा तुम t2 minus t1 तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस तो कंपलसरी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ही हवा which is nothing but a acceleration so बहुत सहज है so तुम इनु काना बुझलो जे स्लोप ऑफ vt ग्राफ represents acceleration slope of vt graph represent acceleration मन रखिथिबो हला आउरे जिनिस हम कहि दिथिली प्रीवियस वीडियो के टिके देखबो मने पक जे कोहा जायथिला जे एरिया ऑफ vt graph प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट मन रखिथिबो दबा आउरे जो प्रूफ कर दो देखे दमा एरिया के हिसाब से कोन डिस्प्लेसमेंट दबा vt graph रो एरिया का देखो सपोज दिस इज x टाइम y axis vt graph पड़ुछ so suppose at this origin the body having velocity v1 or v0 initial velocity u धर लेके चलना then with respect to equal interval of time the velocity of the body changes equally so the graph is straight line तो सेटा बेले काका में यूनिफॉर्म सिलेक्टेड मोशन कर तो फाइनली वेलोसिटी ही गला v धर हला तो तमर ई ग्राफ रो ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ देन हला ab धर इटा के मुई जॉइन कर देली मते एरिया दरकार तो मते जॉइन करबा पड़ला एवं मुई एरिया कैलकुलेट करी एंड दिस एरिया देखबो जे रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप एक्सेलरेशन के रिप्रेजेंट करसी किंतु एरिया टा डिस्प्लेसमेंट के रिप्रेजेंट करसी मन रखतो जे कहू छ तमर प्रॉब्लम सॉल्व करबे के यूज होबा तो देखो ये एरिया के मैं दो भाग में डिवाइड कर देली ए बी सी डी ई सो इटा बे ट्रापेजियम टाइप रो इटा जो तुम उल्टे दबा बोले ए बी डी ई पूरे ट्रापेजियम ही हवा तो एरिया ऑफ vt graph is equal to area of trapezium. And what is the formula of area of trapezium? Area of trapezium is equal to half into दुईटा पैरेलल बाहुर जोगफल पैरेलल बाहु कि हम AO जेतुला A पॉइंट ना दिछ ग्राफ AB सो AO
sorry, OABD. OABD. So parallel দুইটা বাহু হবা OA and BD. OA plus BD into perpendicular হবা কি ED. ট্রাপিজিয়ামর ফর্মুলা সবে পড়িথিব. So is equal to half OA জায়গা কেতে লাগবে V naught because origin to তোমার এতকি যা ভেলোসিটি কেতে V naught. এবার দেখো BD জায়গা লাগবে কেতে BD জায়গাটি দেখো origin to এই পয়েন্ট যা ফাইনাল ভেলোসিটি কেতে আছে V আছে and it is parallel to the BD, so V is equal to BD. So BD জায়গা লাগবে V plus ED জায়গা কেতে লাগবে ED জায়গা টাইম লাগবে because origin to total time ধরো যে এই total time t রে ফাইনাল ভেলোসিটি হলা V, so origin to total time হলা t, so ED জায়গা t লাগবে. That implies this is average velocity because this is initial velocity, this is final velocity. So initial velocity final velocity रो দুই থর velocity হচ্ছে দুই থর যোগ হলা আর by 2 হলা দুই থর যেহেতু হচ্ছে দুই ডিভাইড হলা. So average দাও, so this is average velocity into time. Velocity into time is that displacement. So মনে রাখতে হবে area of the VT graph is always produce displacement. মনে রাখতে হবে. তো কেন সাথে পাইলা বুঝলো নেক্সট. So দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে slope of VT graph is acceleration and area under the VT graph is displacement. মনে রাখতে হবে দুইটা বহুত ইম্পর্টেন্ট. দেখো দুইটা কোশ্চেন করো বুঝি পারবো. দেখো এটা কোশ্চেন দিচ্ছে V T velocity time graph. O A B उनके ना दीजिए A पॉइंट का सीधा सीधा 5, B पॉइंट का सीधा सीधा 10. अब हम से देखेंगे A पॉइंट का सीधा सीधा 5, B पॉइंट का सीधा सीधा 10. So O A B OA दीजिए और तार सीधा सीधा 10. तो तुमको पता है जे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. तो फाइंड velocity and displacement along OA. Sorry, find acceleration and displacement along OA and AB. तो फर्स्ट देखो acceleration. तापर देखो डिस्प्लेसमेंट. तो देखो एक्सेलरेशन ओए रे देखो केते हेबा ओए रे एक्सेलरेशन केते हेबा एबे जस्ट कहली मई जे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ता का रिप्रेजेंट करसी एक्सेलरेशन दैट मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ VT ग्राफ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. सो हमें फर्स्ट एक्सेलरेशन बाहर करमा ओए रे. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जानि छ तमे चेंज इन वेलोसिटी माइनस चेंज इन टाइम. तो देखो माने हमने ओ रे भाग करबा আছে तार माने ओ रे वेलोसिटी के धरबो v1 और ए रे धरबो वेलोसिटी के v2. तो ओ रे टाइम के धरबो t1 और ए रे धरबो टाइम के t2. तार भाग करबा है चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम. सो v2 केते আছে देखो
सीधा सीधा देखो वेलोसिटी ऑलवेज क्या एक्सिस रे कैलकुलेट करबो y एक्सिस रे और टाइम ऑलवेज x एक्सिस रे कैलकुलेट करबो बिकॉज़ y एक्सिस रे वेलोसिटी दीचे x एक्सिस रे दीचे तुमके टाइम और x एक्सिस रे तुम वेलोसिटी कैलकुलेट रॉन्ग ही जीवा बिकॉज़ वेलोसिटी ऑलवेज y एक्सिस रे कैलकुलेट करबो सो देखो a द वेलोसिटी v2 अछि 10 माइनस v1 देखो ओरिजिन में अछि 0 डिवाइडेड बाय t2 देखो एबे t2 सीधा सीधा देखो x एक्सिस रे टाइम नेबो तो x एक्सिस रे टाइम केते अछि ई a रखा जे आके देखो बिकॉज़ फाइनल पॉइंट टोटा को देखा जाउछे तो सीधा सीधा केते अछि t2 तो a रखा जे t2 अछि टाइम 5 माइनस एबे o रखा जे देखो इनिशियल पॉइंट और इनिशियल टाइम 0 रे अछि 0 इनिशियल टाइम so that implies velocity is 10 upon acceleration is 10 upon 5 is equal to 2 meter per second square अब देखो acceleration along AB acceleration is equal to 0 है मन रखिथिबो if the graph is parallel to the time axis then displacement time graph रे velocity 0 हेबा और velocity time graph रे acceleration 0 हेबा जदि से ग्राफ का तुम पैरेलल रहबा टाइम एक्सिस में देखो प्रूफ संगे भी देखो जदि तुम ए रे तुम वेलोसिटी v1 हेबा और b रे वेलोसिटी v2 हेबा सो v2 v1 t2 t1 का हम माने नहीं पकाए ना देखो v2 भी 10 हेबा v1 भी 10 हेबा जे दुई दुईटा पॉइंट सीधा सीधा अछि और से 10 के रिप्रेजेंट करू छै तो v2 भी 10 हेबा v1 भी 10 हेबा सो वेलोसिटी 0 ही हेबा तो मन रखि दिबो पैरेलल एक्सिस रे वेलोसिटी सॉरी पैरेलल एक्सिस में तुम हां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रे वेलोसिटी 0 हेबा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रे तुम एक्सेलरेशन 0 हेबा मन रखियो एबे हम बात करबा डिस्प्लेसमेंट तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट along OA तो हमने कहि छै डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय द एरिया बिकॉज़ स्लोप ऑफ VT ग्राफ एरिया ऑन द VT because slope of VT graph का slope का एक्सेलरेशन के रिप्रेजेंट करबा dv by dt हेबा tan theta is equal to because slope is equal to tan theta and tan theta is equal to dv by dt that means एक्सेलरेशन के रिप्रेजेंट करबा किंतु एरिया का रिप्रेजेंट करबा डिस्प्लेसमेंट के का एरिया VT ग्राफ रो एरिया सो देखो हमें o रो का जे कैलकुलेट करबा तो o a टाइम में से o t1 टाइम में गला a जाय वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड t2 टाइम 5 त हमने एरिया केते कवर कर एल की कवर कर एरिया o a इटा ना दी दियो o a 5 धरो किछि असुविधा नहीं o a सो एरिया इज इक्वल टू का हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर सो डिस्प्लेसमेंट बाहरी जिबा बिकॉज़ एरिया का के रिप्रेजेंट करछि डिस्प्लेसमेंट के एबे जस्ट पढेली तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस केते हबा बेस 5 सेकंड का हबा बिकॉज़ ओए भीतर तुम फाइनल टाइम केते होछ 5 तो बेस हबा 5 सेकंड इनटू परपेंडिकुलर y एक्सिस के बुझल छै तो y एक्सिस जाय a पॉइंट रे केते होछ 10 होछ काजी ई 5 a जेते ई o 10 सेते because e distance of distance parallel so oa can तो कहबे तमे ई परपेंडिकुलर के हिसाब से कैलकुलेट करबो तार अपोजिट लाइन के देखो तो o रे जे 10 अछि तार माने एटा केते हबा 10 हबा जेटा पैरेलल अछि सो एटा जेते हबा एटा भी सेते हबा सो ई परपेंडिकुलर केते हबा 10 बिकॉज़ o रू 10 जाय अछि a पॉइंट तक 10 सो 25 मीटर एबे देखो डिस्प्लेसमेंट बाहर करे AB रे डिस्प्लेसमेंट बाहर करे डिस्प्लेसमेंट along AB सो AB रखा जाने के ट्रायंगल नाम A रखा जाए देखो लोअर लिमिट 5 और B रखा जाए फाइनल लिमिट टाइम रो 10 सो AB रखा जाए ट्रायंगल नाम रेक्टेंगल नाम A B 10 5 रेक्टेंगल A B
10 तमें एटा ना देले भी चलबा ए बी सी डी देले भी चलबा नो प्रॉब्लम सो एटा डिस्प्लेसमेंट एरिया रो बाहरी बापा कि मैं ए डिस्प्लेसमेंट का देले बिकॉज़ फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट बाहर कर बोलछे ए और बी भितरे सो ए और बी भितरे तमर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो एरिया केते कवर होचे कि अब एरिया तो ऑलवेज मन रखिथिबो टाइम एक्सिस संगे नेबो मन रखिथिबो एरिया ऑलवेज टाइम एक्सिस संगे नेबो सो ए और बी भितरे तमर एरिया केते कवर होचे पीएच ए टा कवर करछे 5 सेकंड रे बी कवर करछे 10 सेकंड तो एरिया कवर करा ए बी सी डी सो एरिया इज इक्वल टू ए बी इनटू सी डी सो ए बी केते हेबा इटा भी 10 बिकॉज़ 10 होचे ओरिजिन टू ए तक 10 ओरिजिन टू बी तक भी 10 सो लेंथ हेबा 10 ब्रेथ हेबा तम 5 टू 10 बोले केते हेबा ब्रेथ 5 टू 10 बोले 10 माइनस 5 तो हेबा ना जेतु 5 बोले तो 10 हेबा सो ब्रेथ हेबा तम 5 लेंथ हेबा तम इन जणा पड़छ पार्लर 10 अछि बोले 10 तो 5 into 10 so direct इधर एरिया ही जीवा 5 into 10 so displacement is equal to 50 meter so initially तम डिस्प्लेसमेंट देखो 25 मीटर थिला ओए जा डिस्प्लेसमेंट 25 थिला ए बी जा डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर मन रखो नेक्स्ट क्लास हमें आउ केदन न्यूमेरिकल करमा आज एतकी थाउ नेक्स्ट क्लास हमें केदन न्यूमेरिकल करमा तार संग संग ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हेबाटा हमें पढ़मा हाउ कैन वी प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square b square minus c square is equal to 2as then s and th is equal to a u plus a by 2 whole into 2n minus 1 how can all of this equation prove by using graphical method that we will study in next class. Thank you.